Iqra Arabic School, Mangalore, celebrating India's 71st Independence Day. School, attention! School, clarity! School, attention! School, clarity! School, attention! Second left, court mark. School, halt! Forward march! Group attention. Group standing. Group attention. Group standing. Group attention. Group standing. Group attention. Right left spot now. Forward march. Eyes right! Eyes front! Eyes right! Eyes front! You front! Eyes right. Eyes right!
Salute! Order! से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा. The causes for our backwardness is because we fight around Indians. We fight in the name of religion. We fight in the name of region. We fight in the name of caste. We fight in the name of creed. We fight in the name of language. We fight in the name of state, etc. Quran says, يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. O mankind, we have created you from a man and a woman, and we made you nations and tribes, lest you know one another. The most honorable among you is the pious. So brothers, if we wish to build India above all, if we are willing to eradicate corruption, if you want to free our country from all anti-social and anti-national activities, then it is immense necessary of the hour to be united and to fight against all the forces which threaten the principles of our constitution. May Allah guide us. ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. Allah subhanahu wa ta'ala says, and said, O mankind, and said, these who disbelieve, do not listen to this Quran and make noise during its recitation so that you may. Surely those who have declared, our Lord is Allah, our Lord is Allah, then remain steadfast. On them the angels will descend, saying, do not fear and do not grieve, and be happy with the good news of the Jannah. On this auspicious 31st Independence Day, celebration gives me an immense pleasure to welcome the dignitaries on the dais. Professor Pattabhirama Somayaji was not only a profound professor and an able administrator, but stands as an exemplary for young leaders of the nation, confronting injustice and excelling the evil attitudes with actions and writings. Now, University College, Bangalore as an HOD of English Department. Sir Somaji, we are extremely delighted. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಚ್ಚಿನ ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಬೇಕಾದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈರ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಟೀಮ್ ಪೂರ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೌಲ್ವೀಸ್ ಏರ್ಪುರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗಲು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂದ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪನೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಯಮಾಡಿ ಮುಲ್ಪ IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರ್ಪೇರು ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂನ ಸುನ್ನತ್ ಉಂಡ ಅವೆನ್ ನಿಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಗ ನಿಗಲ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಹೀರೋಯಿಕ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ನಿಗಲೇ ರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೊಜ್ಜು ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ತೋನಗ ಬಾರಿ. There is one saying of Abdul Kalam, our ex-president. Seeing a small dream is a crime. ख्वाब देखो तो बड़ा देखो, छोटा ख्वाब देखना एक crime है. Islam is the best religion and Muslims are the best people. ಬಂದು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಬೀತು ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರಗುಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ನಿಗಲು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪವರ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ಏನು ಅಲ್ಲಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಮುಕ್ತ ವಾಖರ್ ದವಾನ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಜೈ ಹಿಂದ್. ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಸುನ್ನತ್ ನಾಲೆಜ್ ದಾಂತೆ ಲೆಕ್ಕರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದಿ ನೀಡಿದವರ ಹಾಗಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಹಾಳಾರ್ದು BP ಶುಗರ್ ಈ ತರ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಗಲು ಜೋಕುಲು ಏರುಲ್ಲಾರ ನಿಗಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಮೌಲಾನ ಸಿಕ್ತಿರು ಮೌಲಾನ ನಿಗಲ ಚೀಫ್ ಏರುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ವಿಷಯ ಮಸ್ತಿಗೆ ಅದು ಯಾಪನ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಪುನಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಅವರ ಮಸ್ತ್ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಯಾನು ನಿಗಲೇ ಪೂರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಶುಭಾಶಯ ಕೊಡ್ಪೆ ಒಕ್ಕ निकले डिसिप्लिन हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा सारे जहां से अच्छा यूनानु मिस्र रोमा. Our Independence Day also reminds every Indian citizen to fulfill his or her duties properly. As students, we must instill the spirit of self-sufficiency not only in our studies but also in the matter of character and outlook. Perhaps the most significant of all is that we must try to become good citizens who are law-abiding and helpful in nature. As Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said in an authentic hadith, "Khairun nasi anfa'uhum lin-nas." The best amongst the people is the one. The best amongst the people is the one who benefits the. मिटती नहीं हमारी कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा सारे जहां से लहू के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान निकाला है. मेरा दिल है मेरी जान है मेरी आंखों का तारा है. हिंदुस्तान 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 हमारा है. हिंदुस्तान 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 हमारा है. हिंदुस्तान 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 हमारा है. हिंदुस्तान हिंदुस्तान. ಈ ದಿವಸದಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರತೀಯ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತನು ಮನ ಧನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಿಖ್ ಇಸಾಯಿ ಎಂಬ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಭುಜಕ್ಕೆ ಭುಜ ಕೊಟ್ಟು ಹೋರಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿದೆ ನಾವು ಇಂದು ಬಹು ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿರುವ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಯ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಎಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಹೋರಾಡಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಾಜದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೆದಡುವ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ, ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುವ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಾವು ಎಸಗಬಾರದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಐಕ್ಯತೆ ಅದು ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವಾಗಿದೆ. और उसकी तारीफ पर रोशनी डालना चाहता हूँ ताकि ये मुल्क दोबारा अमन और अमान का गहवारा बन सके. आज का ये लहरता हुआ झंडा हमें और आपको 1857 की याद दिलाता है कि जिस वक्त हिंदुस्तान जिसको सोने का चिड़िया कहा जाता था उस पर अंग्रेजी साम्राज्य ताकत गालिब थी और पूरे मुल्क को आग की भट्टी में चौंक रही थी. ये देखते देखते कुछ जाबाज बवाइर हिंदुस्तानी इसकी फिक्र के लिए खड़े हुए और पूरे मुल्क में एक ही नारा लगाए कि इस मुल्क को अंग्रेज जैसे नापाक से आजाद कराना है. क्या इस मुल्क को अंग्रेज जैसे नापाक से आजाद कराना है? तो
इस मुल्क के हर कौम के लीडर अपनी अपनी ताकत के मुताबिक इस मुल्क की बचाव और इसकी आज़ादी में आगे आए और इस नारे के साथ मैदान में कूद देंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। मुल्क की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह अपने अपने कौम की नुमाइंदगी पूरे जोश व खरोश के साथ करते हैं, तो दूसरी तरफ मौलाना कासिम नानूतवी के जाबाज और अशफाकुल्लाह खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे मुहारिक लीडर इस मुल्क के खातिर जेलों और फांसी के बंदों को चुनना आसानी से समझते हैं। पूरे मुल्क के जद्दोजहद से मुल्क आजाद हो गया। अब मकसद आज़ादी को सामने रखकर कौम को उसकी मजहबी आज़ादी दी गई और जमहूरियत का मकसद वाज़ेह किया गया। दस्तूर बना, पार्लियामेंट कायम हुआ, मकसद एक ही था कि कैसे भी मुल्क को खूबसूरत बनाया जाए और इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को बाकी रखा जाए। ये इसी वक्त हो सकता है जब हमारे इस वतन अजीज में बसने वाले महफूज हो, उनकी जानें महफूज हो, उनकी तिजारत महफूज हो, उनकी तहजीबें महफूज हो, उनके खेत व खलियान और इबादतगाह महफूज हो। क्योंकि अगर ये महफूज नहीं होंगे तो इंसान इंसान के खून से होली खेलेगा, पूरा मुल्क लहूलुहान होगा, वतन अजीज की मिट्टी बस मुर्दा व मायूस होगी और ये आवाज देगी कि ऐ मेरे सपूतों, ऐ मेरे सपूतों, तुम आज अपने ही भाइयों के खून से मुझे रंगीन क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम सबके बाप भी एक है, तुम लोगों की माँ भी एक है? लेकिन तुम्हारे इन्हीं बुरी आदतों और करतूतों की वजह से आज दुनिया ने मुझे तहखाने में डाल दिया है और कोई मुझे गले लगाने को तैयार नहीं। इसलिए आज मेरी आंखें अश्कबार है और बड़े दुख से कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अवाम आज फिर से उठो और मुल्क को फिरका परस्ताओं की साजिश से बचा लो, वरना हर तरफ आग ही आग होगा और इस आग में सिर्फ मुसलमान, सिख या ईसाई नहीं जलेंगे, बल्कि ये आग हमारे मुल्क की जमहूरियत और सेकुलरिज्म की ताकत को जलाकर राख कर देगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां। हमारी सरहदों पे नौजवान दिन रात रहते हैं, वहाँ उसकी हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। मिटा देते हैं खुद को इंसान को जहाँ से प्यारा है। हिंदुस्तान 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 हमारा है, हिंदुस्तान 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 हमारा है, हिंदुस्तान 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 हमारा है, हिंदुस्तान 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 हमारा है। तिरंगे की बुलंदी को छुपा सकता नहीं कोई, अमान अल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। तिरंगे की बुलंदी को छुपा सकता नहीं कोई, अमान अल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। जहाँ पे पाँव रखते हम हटा सकता नहीं कोई, हमारे आगे सर अपना उठा सकता नहीं कोई। हजारों दुश्मनों का I'm visiting this place for the first time, but when I look at the students and the teachers and the atmosphere here, I'm very pleased that good education, both religious as well as secular, is very seriously important, and it is reflected in the atmosphere that you have created.
here, who have taken special care to mold you, train you, and look after you and make you into better citizens. It was 70 years ago that we gained independence of struggle by all kinds of people, of all religions, of all regions, of all languages, and so on. Great and small, all kinds of people had participated in it. On the day of India's independence, when several of the political leaders were celebrating India's independence, Mahatma Gandhi was far away from those celebrations in Delhi. He was away in Calcutta. He was trying to bring about communal harmony. The nation, when it became independent, also witnessed unprecedented violence, hatred, the unleashing of hatred and violence, both upon the Muslims as also on the Hindus. And Gandhi said that this Independence Day should be a day for us of penance and prayer. We should look into ourselves. We should pray to God, and we should also look into ourselves and see in what way we can build a better nation. Today, certain colors are trying to drown certain other colors. And the language of patience, of prayer, of compassion, of love, peace, mercy and pity, no future is built without the strong foundations of the past. And we should be able, I'm sure, in the years to come you would, study the history of India's freedom struggle and try to understand what kinds of dreams went into the making of the freedom struggle and what. There are three types of people. There are how many types of people? Three types of people. One who create fire. The one who create fire. Second, the one who looks at the fire and do not do anything. Second, looks at the fire and do not do anything. And third, the sparrow. They go out, they see the problem and brings the water and sprinkles on the forest. This is the third type of people. Friends, as we celebrate this feast, this our Independence Day, are we here in India to create fire? Are we just stand and look at the fire? Or are we like sparrow who go get the fire, get the water and sprinkle this on the forest so that fire disappears? So we have to ask three questions today. What have I done for country? What have I done for country? What am I doing for country? What will I do for my country? मुल्क में किसका गुजारा है मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है बता क्या पूछ Opportunity to propose a vote of thanks on this year's Independence Day celebrations. All my praise and thanks goes to Allah subhanahu wa ta'ala for His grace and rahmah bestowed on us in making this celebration a grand success. कोई भी देश परफेक्ट नहीं दे होता, उससे परफेक्ट मनाना पड़ता है. Yes, I am proud to be an Indian. I take pride in my Indian identity. But are we the best country? Are we the best people on the planet? I am afraid to say no. You feel the same zeal and enthusiasm to make our country great. On that note, I thank Professor Soumyaji, the chief guest of today's function, on behalf of Iqra Arabic School and on my own behalf. Thank you, sir. Whatever thing we do, little help we have to do for others. I thank you very much, Reverend Father Eric Matthias, for your
enlightening speech for our children. I hope our children will definitely take it in their life. I also give a special vote of thanks on behalf of Iqra Arabic School, Ali Janab Abdul Rahul Puttige, and who for being with us in spite of his tight schedule. And he has really brought us colors to the gathering by his gracious presence and good message. I thank the principal, Ali Janab Salim Ustad, for inspirational guidance rendered for this function. And I thank all the ulemas, teachers, and for their wholehearted cooperation. I thank the parents who have come here. मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है, मेरे हाथों के रेखाओं में नक्शे हिंद सारा